Okay, so hi everyone, this is your host Saloni here, and I hope you're doing absolutely amazing. So if you all can hear us and if you all can see us, please let us know in the comment section. अगर सबको दिखाई दे रहा है और अच्छे से सुनाई दे रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें लिख कर बताइए, so that we can start further here. Hi Nejal, hi Julie, hello Sakshi. Okay. So I hope everybody is really excited for today's session because today we are back again with one of our baking sessions and today we are going to learn about the pistachio cookies. आज हम pistachio cookies सीखने वाले हैं and I hope everybody is really excited. मुझे personally cookies बहुत ज़्यादा पसंद है, so I am very excited for the session. So let me introduce you to our beautiful trainer here. We have Kamalpreet here. Kamalpreet, can you please say a hi to everybody here? Hi everyone. So I hope you all can see this is your beautiful trainer Kamalpreet. She will be the one to teach us all about pistachio cookies today. आज हमें जो pistachio cookies जो सिखाने वाली है वो Kamalpreet सिखाने वाली है. And as you know, she's one of our most favorite and like she's one of our star bakers we have here. So I hope everybody is really excited for today's session. So just give me a quick thumbs up and then we will start with it. जल्दी से मुझे thumbs up दीजिए आप comment section में और हम लोग start करेंगे session को. Also remember that the session is going to be both in Hindi and English. पूरा ही session हिंदी और English दोनों ही languages में होगा. It's a PDF products already आपके ऊपर updated है. आप वहाँ पे जाकर के check कर सकते हैं. Session के बाद आपको recordings भी मिल जाएंगी. आप उसको भी check कर सकते हैं. And certificates भी आपको आपके ऊपर मिल जाएगा. And if in case you haven't registered, you can register through the link given in the description box. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी हुई है उसके थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं. एंड आई होप एवरीबॉडी यू ऑल आर अवेयर ऑफ दीस थिंग्स. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन. सो यस Kamalpreet, over to you. Thank you so much, Saloni, for the introduction. And hi to everyone. Today we are going to make pistachio cookies, bakery style. तो आज हम सब बनाने वाले हैं बेकरी स्टाइल पिस्टाशियो कुकीज. तो जो मेरे साथ बना रहे हैं वो साथ बनाएंगे, जो नहीं बना रहे हैं वो यहाँ पे अच्छे से लर्न करेंगे और बाद में बनाएंगे. The people who are baking along with me will do along with me, and who are not doing, they will surely make it afterwards, and I would love to see your pictures. So let's begin. All set, ready? Yes, Kamalpreet, I think we all are ready now because काफी सारे thumbs up हमें यहाँ पे मिल गए हैं. Let's start with the session now. Okay. So for pistachio cookies, the first step we need is sugar. I already have sugar in this bowl. Okay. So preferred caster sugar, but you can also take powder sugar. So सबसे पहले हमने यहाँ पे बोल में sugar ली है. Caster sugar prefer है, आप powder sugar भी ले सकते हो. In this, I am going to add room temperature butter. Sugar is 1/2 cup and butter is 113 grams. So here we have 1/2 cup sugar and 113 grams of your butter here. Grams, it's 110 grams. Okay. So we are going to beat this till the time this is light and fluffy and the color is pale, light. Okay, इसको हम बीट करेंगे और तब तक बीट करेंगे जब तक ये लाइट और फ्लफी हो जाएगा और इसका कलर भी पेल हो जाएगा. So you can see here we are taking 1/2 cup of sugar and 110 grams of butter at room temperature. 113 grams of butter and 1/2 cup of sugar, which is 110 grams.
will be very light. That means your creaming is nicely done. जब आपका कलर बिल्कुल लाइट हो जाएगा, that means आपकी creaming काफी अच्छी तरीके से हो गई है. Your color should be light. That means your creaming is done nicely. So I'm just going to do it for a minute or two. So beating always needs to be done in one direction. Beating जब भी आप करोगे एक ही direction में करोगे. Okay. Now in this I'm going to add cardamom powder, which is elaichi powder. Pistachio, either you can take roughly chopped or you can take coarsely grinded. तो अभी हमने इसमें ऐड किया है कार्डमन पाउडर, इलायची पाउडर और हमने यहाँ पे ऐड किया है पिस्ता. आप मोटा मोटा दाना भी ऐड कर सकते हो, हल्का सा चॉप किया हुआ, और ऐसे जो हमने हल्का सा इसको ग्राइंड करके रखा था पाउडर की फॉर्म में, वो भी ऐड कर सकते हो. सो वो आपकी चॉइस पे है, दोनों भी ऐड कर सकते हो, दोनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लगता है. Next, I'm going to add flour, custard powder, and lastly, I'm going to add baking powder. तो मैंने अभी इसमें मैदा ऐड किया है, कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है और बेकिंग पाउडर ऐड किया है. मैदा और कस्टर्ड पाउडर पहले से छना हुआ था, तो आपको छान के डालना है. द कस्टर्ड पाउडर एंड द फ्लावर नीड्स टू बी sieved बिफोर एडिंग. नाउ गिव इट अ मिक्स. So you can do this with your hands also. Beater is not required. And at this stage, you will add milk. So, Kamal, can you please let us know the amount of flour and custard that you have added here? I will tell all the measurements. Let me complete the dough and I will tell all the measurements. Okay? Okay, sure. So, एक बार हमारा डो बन जाए, उसके बाद फिर हम आपको बता देंगे कि कितना, मतलब जो मेजरमेंट्स हैं वो सारी मेजरमेंट्स हम एक बार आपको बता देंगे. ऑल्सो ये जो रेसिपी है इसका एक पीडीएफ भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगा, प्लस ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो यू कैन चेक देयर. So you have to combine everything. You can also add extra milk if required. So you have to do this with your hands only. So ये जो आप देख रहे हैं, हम जो डो बना रहे हैं, ये जो डो आप बनाओगे ये आपको मेक श्योर करना है जब आप हाथ से बनाइए तो ज्यादा अच्छे से बनेगा, क्योंकि हाथ से ही अच्छे से बनेगा. So आप हाथ से ये डो बनाइए, अच्छे से आपका डो बन जाएगा इससे. It's a hard dough. It's not very soft. So add milk according to that only. It is written in the recipe also, but if you need to add extra just to combine it, you can add, but you have to keep your dough hard. So remember ladies, आपका जो डो बनेगा वो एक हार्ड डो बनना चाहिए, एक ऐसा कड़ा सा जो डो होगा वैसा बनना चाहिए, बहुत ही सॉफ्ट डो नहीं बनेगा. Trainer, if you want, I can quickly repeat the
measurements once. Sorry. I said if you want, I can quickly repeat the measurements once. Yes. Okay. So जो हमारा मैदा था और the all-purpose flour, that was 1 plus half cup. That means 1.5 cup. Butter हमारा था 113 grams. उसके बाद हम लोगों ने custard powder add किया था. That was 1 tablespoon. Sugar was half cup. उसके बाद फिर आप crushed pistachio डाल सकते हो, cardamom powder डाल सकते हो. And उसके बाद फिर हम लोगों ने milk यूज किया है उन सबको एक साथ bind करने के लिए. यस हिमानी, आपको इसकी रिकॉर्डिंग पंखुरी आपके ऊपर मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं. यस रेखा, द मिल्क इज एट रूम टेम्परेचर. Whenever you are working or whenever you are baking, all your materials need to be at room temperature. You do not need to get something extremely cold, extremely hot. They all need to be at room temperature. Okay, so now the dough is ready. What you have to do now, you have to shape it. If you have gone through the module, the next step is shaping. So we are going to shape it here. Okay, I will quickly repeat the measurements. All-purpose flour is 1.5 cup. In grams, all-purpose flour is 205 grams. If you want to make a note, please make a note of it. I am repeating again. ऑल पर्पस फ्लावर मैदे की क्वांटिटी है 1 कप और आधा कप. अगर ग्राम्स में आप देखना चाहते हैं तो 205 ग्राम. मक्खन 113 ग्राम. बटर इज 113 ग्राम. वनीला कस्टर्ड पाउडर 1 TBSP. कस्टर्ड पाउडर वनीला फ्लेवर का आप लेंगे, क्वांटिटी रहेगी 1 TBSP, जो कि 8 ग्राम के इक्वल है. आप कप्स में ले सकते हैं, ग्राम्स में ले सकते हैं, मैं दोनों बोल रही हूँ आपके लिए. 8 ग्राम. ओके, नेक्स्ट वी हैव शुगर विच इज हाफ कप इक्वल्स टू 110 ग्राम्स. शुगर आधा कप है, ग्राम्स में 110 ग्राम्स. बेकिंग पाउडर हाफ TSP. पिस्ताशियोज क्रस्ट या क्रश्ड लेंगे या आप बिल्कुल पाउडर फॉर्म में लेंगे. 12 से 15 पिस्ताशियोज आपको पूरे मेजरमेंट लिए यूज करने हैं. यू हैव टू यूज 12 to 15 pieces of pistachios, either crushed or powder form. I will think your camera is still there. Yeah. Okay. Yeah. 12 to 15 pistachios you have to take. Just 1 second. I was going through the notes. Can you please just shift the camera onto another camera only? Sure. Yeah. Next, we have cardamom powder. That is not on. Let's see what happened. Just 1 second. I'm sorry for that. Don't worry, ladies. I'm writing everything down. You can just get it. I have wrote everything here. You can check it. मैंने सारी चीजें यहाँ पे आपको लिख करके सेंड कर दी हैं. You can check here. So I will quickly repeat. अभी तक जो भी बताया गया था. So we have taken 1 plus half cup. That is 1.5 cup of your maida or all-purpose flour. That is equal to 205 grams. Butter is 130 grams. Custard powder is 1 tablespoon or 8 grams. Sugar is half cup or 110 grams. Baking powder is half teaspoon. Okay. So I hope everything is clear now. And remember, you are supposed to make a very hard dough out of it. आपको एक hard dough बनाना होगा आपके इस पूरे के पूरे. Yes, Kamalpreet, the camera is working fine. The dough wala camera is working fine. Okay, so I hope the measurements are clear now. Yes, they are clear. Okay.
So now you have to shape this in a log. Okay, I'm dividing this into two. So first option is either you can shape it like a log. So यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोगों ने ऐसे छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, आप उसको ऐसे सिलेंड्रिकल या लॉग जैसा भी बना सकते हैं स्टार्टिंग में। Cardamom powder is 1 teaspoon, ladies. 1 teaspoon हम लोगों ने cardamom powder या इलायची पाउडर जो है वो 1 teaspoon लिया। And the milk is your 3 tablespoons. Also milk 3 जो है 3 TSP. tablespoons. Sorry, yes, 3 teaspoons. एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी भी वो बाइंड नहीं हो रहा है, इन दैट केस आप थोड़ा सा और ले सकते हैं, बट ये चीज याद रखिएगा कि आपका डो एक हार्ड डो होना चाहिए। योर डो नीड्स टू बी लिटिल हार्ड, यू कैन नॉट हैव अ सॉफ्ट डो। ओके, so I will quickly repeat what we have done till now. First of all, we took sugar, that was half cup, we added butter in it. Sorry. Yes, so we took half cup of sugar, then we added butter in it, that was 103 grams. Mix them together. Then we added our pistachios and the cardamom powder together. Mix them well. Then we added all-purpose flour or maida. That was 1 plus half cup, that is 1.5 cup. उसके बाद उसमें we added custard powder, that was 1 tablespoon. Mix them all well. उसके बाद फिर we took some milk. थोड़ा सा दूध दिया हम लोगों ने around 3 teaspoons और उसके थ्रू हम लोगों ने एक डो बनाया and the dough that we have made is a hard dough. Okay, तो ये पूरा था जो अभी तक हम लोगों ने किया है. So you can see one of the portion I have made into a log shape. And in the other one, I am adding green color. So these are two options which you can do. Okay, so log shape and the colored one I will show, which I have prepared before. So this is the colored one. What I have done, I have just mixed color in it. That's it. So ये वाला जो डो है इसमें मैंने सिर्फ कलर मिक्स करके पहले से रखा हुआ है. So कलर मिक्स करने के बाद, ग्रीन कलर मिक्स करने के बाद ऐसी लुक आई. ओके, एंड ये मैंने पहले से फ्रीज करके रखा था, लॉग फ्रिज में रखा था, सॉरी. फ्रिज में रखने के बाद आप देख सकते हो ये लुक आई. दिस इज the log shape which I have kept in the fridge for approximately an hour. So this is the look you can see, and this is after adding the color. You can see this look as well. So yes, we can add color also here, ma'am. You can see in one of our doughs we have added color. एक डो में कलर भी ऐड किया है. And remember, एक बार आपका ये डो बन जाएगा उसके बाद उसको सेट होने के लिए आपको approximately 1 घंटे के लिए उसको फ्रिज में रखना पड़ेगा. You're supposed to keep your dough in the fridge for approximately an hour to get it set very well. Okay. So you can see now I am cling wrapping it, and I will keep it in the fridge for an hour. So यहाँ पे जो हमने अभी अभी डो बनाया था उसको आप देख सकते हो कि मैं यहाँ क्लिंग रैप कर रही हूँ, और क्लिंग रैप करने के बाद मैं इसको फ्रिज में रखने वाली हूँ 1 घंटे के लिए. जब सेट हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें से कट करके निकालूंगी. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे प्री प्रिपेयर करके रखा था. दैट्स व्हाई आई हैव प्री प्रिपेयर्ड हेयर. क्लियर टिल हेयर? So yes, ladies, I hope अभी तक जितनी भी चीजें नहीं है वो सब आप लोगों को क्लियर हो क्या होगा. If yes, just give us a thumbs up in the comment section and we will move forward. Okay, Kamalpreet, for adding the color, we just need to put a drop of color and then just mix it together, right? Exactly. You just need to add a drop of color. Can you please shift the camera? You just need to add a drop of color
and just knead it till the time the color is nicely in your dough. Nicely Can get we mixed in your dough. So can we do this initially also when we are adding our maida and all? Can we Yes, add yes, color you there can. also? यस टोटली. अगर आपको कलर ऐड करना है बिल्कुल एंड में भी डाल सकते हो और हल्का सा उसको गूंद सकते हो जब तक कलर अच्छे से मिक्स हो जाए पूरे बैटर में. पहले डालना चाहते हो तो पहले भी डाल सकते हो. जब आप क्रीमिंग कर रहे हो बटर और शुगर की तभी डालना चाहते हो तभी डाल सकते हो. कलर कभी भी डाल सकते हो. कुछ ऐसा नहीं है कि इसी पॉइंट पे डालना है या इसी पॉइंट पे डालना है. Okay, and one more thing we forgot in this vanilla essence and kevra essence. So that also you can add while creaming or while you are adding the dry ingredients. So as both the essence also you can put at any time. Okay. So essence भी आप कभी भी डाल सकते हो. बटर शुगर की जब क्रीमिंग कर रहे हो तभी डाल सकते हो या जब ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर रहे हो तभी डाल सकते हो. Okay. It's just for a good fragrance. If you want to avoid that, you can avoid that also. It's not mandatory. वो सिर्फ Okay, एक फ्रेग्रेंस के लिए है. आप नहीं भी डालना चाहते तो मत डालिए. कोई मैंडेटरी नहीं है. सिर्फ वनीला एसेंस है, सिर्फ वनीला एसेंस डाल दीजिए. ओके. Yes. Any so other yes, question? yes, there's a question. That ma'am, is it necessary to cling wrap the dough and then keep it in the fridge for an hour, or to just keep it like that? Yes. Yes. At least for minimum for 30 minutes, it is mandatory. Why? Because when you keep it in the fridge, the butter which we are using get harden up and it is easy to cut cookies out of it. The shape of small cookies, it get easy to cut out. If you will try to cut out cookies when it is fresh, it would be very difficult and very crumbly. तो जब आप फ्रिज में रखते हो जो बटर आप हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे वो जम जाता है और बाद में इसको कट करना इजी हो जाता है. रोल करना है या कट करना है कुछ भी करना है वो इजी हो जाता है. अगर आप फ्रेश डो के साथ ट्राई करोगे तो बहुत क्रम्बली होता रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा. तो 30 मिनट्स एटलीस्ट इज मैंडेटरी. 30 मिनट तो Okay. आपको करना ही करना है फ्रिज का जो प्रोसीजर है. Okay, so there's a question. That ma'am, अगर हम डो को अगर कभी ज्यादा मिक्स कर दें तो क्या हमारी कुकीज हार्ड हो जाती हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि हमें उसे कितनी देर मिक्स करना है? जस्ट एक बार आपका डो पूरा कंबाइन हो गया उसके बाद आप उसको ज्यादा मत करो. वंस योर डो इज नाइसली कंबाइंड, डोंट नीड इट मोर देन दैट. You have seen that while beating, I have just mixed everything nicely, added the milk. After adding the milk, I have used my hands to form a dough. So with your hands, you can judge when everything is nicely formed, nicely when a dough is nicely formed, when everything is mixed together. So just stop at that point. Okay. जब एक बार सब कंबाइन हो गया अच्छे से, डो बन गया, आपको वहीं पे स्टॉप हो जाना है. इसीलिए आपने देखा होगा मैंने बीटर पहले ड्राई में यूज करा, दूध डालने के बाद मैंने बीटर नहीं यूज करा. बीटर यूज करती तो मैं जज नहीं कर पाती, इसीलिए मैंने हैंड्स का यूज किया. हैंड से आप जज कर पाते हो कि सब कुछ कंबाइन हो गया है अच्छे से. ओके. तो कलर भी आप डालोगे तो बहुत ज्यादा नीडिंग नहीं करनी. कुकीज में अगर आप नीडिंग करोगे तो ग्लूटेन फॉर्म हो जाएगा जो अच्छा नहीं है. If you will try to knead this dough, the gluten will form, which is not good for cookies. Okay, so there's a Yes. question that ma'am, are we supposed to use the salted butter or we can go for unsalted? If you want to use unsalted butter, just add a pinch of salt. अगर आप unsalted butter use करना चाहते हो, तो एक pinch of salt add कर दो. Okay, so let me just repeat one thing complete here. So ladies, remember, you can find the PDF of the recipe in the Pankhuri app. You just need to go on the Pankhuri app. You will find the link in the description box. And if you haven't registered for the course, the registration link of this course is also available in the description box. Register yourself. You will find your booking on the Pankhuri app. Go there. You can find the recordings, you can find the PDF, you can find the products, you can find the certificates. Everything will be there available on the Pankhuri app. So don't worry about it. Okay? So yes, Kamalpreet, I think we can move further now. Sure. So you can see now, please shift the camera. Sure. Yeah. I am lining my baking tray with a baking paper. So for that, I am applying a little bit of oil on the tray so that the baking paper sticks. So आप देख सकते हो पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल बेकिंग ट्रे पे लगा रही हूँ
ताकि जो मेरी शीट है वो अच्छे से स्टिक कर जाए. ओके, एंड इवन ऑन द टॉप आई एम पुटिंग अ वेरी थिन लेयर ऑफ ऑयल. तो ऊपर भी मैं बहुत पतली सी एक लेयर लगा रही हूँ ऑयल की, ताकि बिल्कुल भी कुकीज स्टिक ना करे, सो दैट कुकीज डजंट स्टिक एट ऑल. सो वेरी थिन लेयर. सो यू कैन सी हम लोग ने ऑयल अप्लाई कर दिया था ट्रे के ऊपर. उसके ऊपर हम लोग ने पार्चमेंट पेपर रखा एंड देन इसके ऊपर हम लोग ने बिल्कुल हल्का सा ऑयल लगाया है. आपको बहुत सारा ऑयल नहीं लगाना है, बस बहुत हल्का सा आपको ऑयल लगाना है. ओके, So let's go for the log first. So for log, it is very easy. Once this is done, you just have to cut it into pieces and keep it on the baking tray. So make a very small cut on the first end just to make it clean. And 1/4 centimeter of pieces you have to cut. So you can see nice pieces are coming. so ये आप देख सकते हैं जैसे हम लोग स्टार्टिंग में से पहले डो को हम लोग ने ऐसे स्क्वायर सा या लॉग जैसा शेप दिया था. वैसे ही करने के बाद हम लोग फ्रिज में रखा. फ्रिज में रखने के बाद तो हमारा डो हल्का सा हार्ड हो गया एंड देन नॉर्मल हम एक नाइफ के हेल्प से इसको कट कर दे रहे हैं, जिससे हमें एक स्क्वायर शेप यहाँ पे मिल जाता है. सो यस चांदनी, आप ओटीजी में बना सकते हो, आप माइक्रोवेव में बना सकते हो, आप दोनों में ही अपना जो कुकीज है वो बना सकते हो. Even you can try this on gas. ओके, सो अंकिता फॉर योर क्वेश्चन, कोई इशू नहीं है. अगर आपके घर में कोई मोल्ड नहीं है तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जो हम अभी शेप बना रहे हैं, इसके लिए हम लोगों ने कोई भी मोल्ड नहीं यूज किया है. हम लोगों ने नॉर्मल अपने हाथ से ऐसे वो जो डो था उसको ऐसा शेप दिया एंड देन उसके बाद हम उसको नॉर्मली नाइफ से कट कर दे रहे हैं, तो हमें ये स्क्वायर शेप जो है वो मिल जाता है. तो इसके लिए हमें कोई भी मोल्ड की जरूरत नहीं पड़ी. ऐसे आप भी बिना मोल्ड के भी कुकीज बना सकते हैं. एंड आई थिंक कमलप्रीत जो सर्कल में जो कुकीज बनती है उसके लिए भी तो आई डोंट थिंक कि हमें डो सॉरी मोल्ड्स की You जरूरत can take पड़ती है. anything. नहीं, घर में से आप कुछ भी पिक कर सकते हो राउंड शेप का. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको राउंड शेप के लिए भी कोई स्पेसिफिक कटर चाहिए. आप किसी चीज का ढक्कन ले सकते हो, कोई कटोरी ले सकते हो. इट्स नॉट मैंडेटरी दैट यू नीड अ कटर फॉर anything from your normal house use. Like you can pick any lid, you can pick any bowl, steel bowl, which have sharp edges. So that is not required that you have to buy a special mold to cut the cookies. Okay, so Kavali, there are a lot of requests asking that can you please let us know the process of baking it on the gas also. Sorry, your voice was a little low. I was saying that there are a lot of requests that is it possible that you can let us know the process of baking it on the gas. I will share that. Don't worry. Let me put this in the baking first. And while this is in the baking, we will discuss different methods of baking this. Okay, sure. So in this log shape, just some extras come out. That's okay. You can just shape it and keep it for your tasting. Okay. Otherwise, you can see nice square shape. We will just keep this on the baking tray with some gap because this will expand a little. Not much, but a little. So इसको हम baking tray पे अभी रख रहे हैं थोड़े थोड़े gaps के साथ, क्योंकि थोड़ी सी ये expand करेगी. बहुत ज्यादा नहीं, but थोड़ी सी करेगी. And don't worry, ladies, we will let you know कि at what temperature you are supposed to bake it in the OTG or the microwave. OTG या microwave में आपको कितने या कौन से temperature पे bake करना है ये हम आपको बताएंगे. वैसे हमें थोड़ा सा time दीजिए.
So, Kamalpreet, there's a question here. Yes, please. That ma'am, if we want to use the cookie molds, are we supposed to roll our dough and then uske baad we are supposed to do it? Yes, I am coming to that also because for this we are going to use a cookie cutter. Okay. So don't worry ladies, ये जो हमारा सेकंड डो है इसको हम दिखाएंगे कि आप कैसे कुकी कटर की हेल्प से बना सकते हैं. फर्स्ट वाला बिना कुकी कटर के था, सेकंड वाला हमारा कुकी कटर के साथ आप देख सकते हैं. So for this I need butter paper. You will keep your dough in the butter paper, overlap it with one layer. And you will start kneading it. So ऐसे आप बटर पेपर के अंदर डो रखेंगे और उसको धीरे धीरे नीड करना स्टार्ट करेंगे. So you can see here हम लोग ने अपना जो डो है उसको बटर पेपर के अंदर रख दिया है और उसके बाद हम उसको रोल कर देंगे. I'm sorry for that. Yes. So is there any specific reason why you keep it like this and do the molding part? So that it doesn't stick to the surface. With the butter paper, it will not stick. But if you will try to do it on a marble, it will stick. Okay. So just bring it together and start rolling it again till you have a desired thickness. जितनी आपने thickness लॉक में से कट करी थी, उतनी thickness जब तक आपको मिल जाएगी, तब तक आपको इसको रोल करना है. So yes, ladies, let us know if everything till now is clear to you. जितनी भी चीजें हुई हैं, वो सारी आई होप अभी तक आप लोगों को समझ में आ गई होंगी. कोई भी अगर क्वेश्चंस हैं तो प्लीज हमें अभी बताइए. Okay, so the thickness is right. So with the help of a cookie cutter, I'm going to cut small pieces. So you can take a big cookie cutter also. I like my cookies to be small, so I am doing it with the small cookie cutter. So you can see here हम लोग अपने कुकी कटर से छोटे छोटे से पीस कट कर ले रहे हैं. अगर आप चाहिए तो आप एक बड़ा कुकी कटर लेकर के बड़े पीसेस भी कट कर सकते हैं. So यहाँ पे मैं crinkle cutter use कर रही हूँ. So you can use a crinkle cutter also for other type of design. Get rid of the extra. So trainer, I've seen lot of videos जहाँ पे लोग they just take the dough, just make a ऐसा गोल and then just keep it on the tray. So does that process also works? Yes, you can do that also. You can try that also. So make a small batch if you want to be creative. Just be creative with types of things. Try a small batch and try if it works for you. There is no harm in being creative. So you can see out of one dough, I have made two shapes. So try being creative. That's totally fine. So just remove the extra first so that your cookies doesn't get disturbed. So trainer, just one request. So once we are done with this, can you show them कि thickness क्या है हमारे cookies? Like without Sorry, कितनी thickness कितनी है हमारे cookies की? Can you just get it a little close to the camera so that they can see that?
Okay. Let me put it in the baking tray and I will show you the complete baking tray. Okay, sure. So very gently you have to take it out and keep it on the baking tray. So if it's not in the fridge, this process gets really difficult. अगर आप फ्रिज में नहीं रखोगे तो ये प्रोसेस बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा. जितना इजीली ये लिफ्ट हो रहा है इतना इजीली लिफ्ट नहीं होगा, बहुत स्टिक करेगा. So that gets easy. Just preparing one more tray. So yes, ladies, till then, till Kamalpreet is doing this, you can let us know कि आप लोग ने उससे पहले कितने कितने लोगों ने cookies bake की हैं और कौन कौन सी cookies bake की हैं. So I have baked chocolate cookies like the choco chip cookies. So because मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है. And जब मेरी सबसे पहली बार cookies बनी थी, the worst part was कि वो cookies बाहर आने के बाद soft हो गई. And I was not very aware of it. तो मैं इतना सोच रही हूँ कि ये हार्ड नहीं हो रही है, हार्ड नहीं हो रही. मैं उसको बार बार माइक्रोवेव में रख करके ना ट्राई कर रही थी कि वो हार्ड हो जाए, हार्ड हो जाए. एंड इन द एंड मैंने उसको से छोड़ दिया था. बाद में वो हार्ड हो गई थी एंड वो इतनी ज्यादा हार्ड हो गई थी कि इसको खाया नहीं जा सकता था. Because ठंडी होने के बाद कुकीज आपकी हार्ड होती हैं और जब वो ओवन से निकलती हैं तब वो सॉफ्ट होती है. So you have to repeat the process with the remaining dough. And if you feel your dough is soft and you can't handle it anymore, just keep it in the fridge for some time, like 30 minutes, and begin the process again. So यहाँ पे जो बचा हुआ डो था उसको मैं दोबारा रोल कर रही हूँ. और अगर आपको लगता है कि आपका डो सॉफ्ट हो गया है, आप दोबारा उसको 30 मिनट्स के लिए अप्रोक्सीमेटली फ्रिज में रखेंगे और फिर उसको रोल करना स्टार्ट करेंगे. ओके. So I'm trying to get as much as cookies from this dough before keeping it in the fridge. So here you can see हम लोग वापस इसको वैसे बना रहे हैं और उसके बाद हम कट कर रहे हैं इसको. Chandni, if you want, you can share the pictures with us on the Pankhuri app also in the post group. तो Pankhuri app के ऊपर post group होता है ना, आप उसमें share कर सकते हैं. We love to see. And also, if you can share it on the social media, तो आप social media पे share करके Kamalpreet को tag कर सकते हैं और हमें भी tag कर सकते हैं @AskPankhuri. And Kamalpreet, can you please let us know your Instagram ID also? It's sugar.maniacs. MANIACS. Okay, just last few cookies and then we are going to put this in the baking. So for baking, you have to preheat your oven at 180 degrees Celsius for about 10 minutes.
and you have to bake this cookies in your OTG for 12 to 15 minutes. Okay. Upper rod on, lower rod on. If you have fan, fan should also be on. So upper rod on रहेगी, lower rod on रहेगी. Fan है तो fan भी on रहेगा. नहीं है तो that's totally fine. Preheat करोगे 180 degree Celsius पे 10 मिनट के लिए. Okay, so this dough I will handle later on. So let's keep this aside. And you can see I have prepared 2 trays here. Okay, visible? Yes, it is. Can we get it a little close to see the thickness ones? Sure. For thickness, I will show you an individual cookie. For this, you can see the thickness. And for this, you can see the thickness. So you can see ये हमारी cookies की thickness है दोनों. Can we get it a little towards left? Okay. Clear? Yes, so for I think that is clear. garnishing, you can add the crushed pistachios or pistachio powder. So you can see अभी अगर आप उसको if you want to decorate it or what do we say, garnish it. Yes, if you want to garnish it, तो आप इसके ऊपर ऐसे crushed pistachios डाल सकते हैं and it will look absolutely amazing. After adding the garnish, just press it a little. Otherwise, it's with a fan, it's going to get away from the cookies. So डालने के बाद आप हल्का हल्का इसको प्रेस कर लेना, because अगर fan है तो fan से सब उड़ जाएगा. Okay, so just press it a little. So you can see here हम लोग ने इसके ऊपर जो pistachios हैं उसको डाल दिए हैं. आप भी ऐसे डाल सकते हैं. हल्का सा press down कर दीजिए ताकि आपके pistachios अच्छे से इसके ऊपर stick हो जाए. So now we are going to put this in the baking. For 12 to 15 minutes. Yes, we can now move to the questions. Yeah, please shift the camera. Sure, just a second. Okay. Yes. OTG method, you know, if OTG method is clear, please give me a thumbs up, then I will move to the other methods. OTG का method अगर आपको clear है, एक बार thumbs up दे दो, उसके बाद मैं आगे move करती हूँ microwave और gas method पे. Can you repeat the OTG once again? OTG is 180 degrees Celsius, preheating for 10 minutes at 180 degrees Celsius, upper rod on, lower rod on. If you have fan, that also needs to be on. If you don't have fan, that's totally fine. Upper rod on रहेगी, lower rod on रहेगी. Fan अगर आपके OTG में है, fan भी on रहेगा. नहीं है तो कोई बात नहीं. Preheating करनी है 10 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे. Preheating के बाद baking करनी है same temperature पे 12 से 15 मिनट के लिए. You have to preheat at 180 degrees Celsius and again bake at the same temperature after preheating it for 10 minutes at for approximately 12 to 15 minutes. Okay. So yes, I think OTG is clear. Let's move on to the other baking methods. For microwave, you will select convection mode and you will set the temperature at 180 degrees Celsius. Microwave में आप convection mode select करोगे.
टेम्परेचर सेट करोगे 180 डिग्री सेल्सियस, योर माइक्रोवेव विल ऑटोमेटिकली प्री हीट फॉर फ्यू मिनट्स. इफ नॉट, लेट इट प्री हीट फॉर 5 मिनट्स. आपका माइक्रोवेव ऑटोमेटिकली प्री हीट करेगा कुछ मिनट्स के लिए. अगर नहीं कर रहा तो माइक्रोवेव आप 5 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे. ओके, माइक्रोवेव में अप्रोक्सीमेटली सेम टाइम लगेगा. इनफैक्ट जल्दी कुकीज बन सकती है. माइक्रोवेव की हीटिंग थोड़ी स्ट्रांग होती है तो उसमें जल्दी बन जाती है. सो 10 to 12 मिनट्स आप माइक्रोवेव के लिए सोच के चलो. फॉर माइक्रोवेव थिंक इट वुड टेक 10 to 12 मिनट्स बिकॉज microwave baking is little fast comparative to OTG, and preheating is for 5 minutes if your microwave is not doing it automatically. Clear? Yes, I think that is clear. Okay, and for gas method you need to take a big kadhai. In that you will keep the wire rack which you use to keep hot cookers or kadhai. Do you know about that? If yes, please let me know. Yes, ladies. I hope अभी सबको पता होगा कि वायर रैक क्या होती है. आप नीचे की तरफ वायर रैक रखते हो जिसके ऊपर आप सब गरम गरम सामान रखते हो. वायर रैक स्टैंड होता है जिस पे आप गरम कुकर और कढ़ाई रखते हैं. Yes. You have to keep it in your kadhai and cover it with the lid. On low flame, you will preheat the kadhai for approximately 10 minutes. आप एक कढ़ाई लेंगे, उसमें वायर रैक रखेंगे, उसको लिड से कवर करेंगे और लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे आप उसको प्रीहीट होने देंगे 10 मिनट के लिए. Once preheating is done, you will prepare a plate which can be put inside the kadhai. फिर उसके बाद आप एक प्लेट प्रिपेयर करेंगे जो कढ़ाई के अंदर जा सकती है विद बटर पेपर एंड कुकीज ऑन इट, एंड यू विल पुट दैट प्लेट, कवर इट विद लिड एंड यू विल डू द बेकिंग ऑन लो फ्लेम. ओके, आप उस कढ़ाई को रखेंगे, लिड से कवर करेंगे और बेकिंग अपनी 12 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे करेंगे. Bake for 12 to 15 minutes, right? Yes. The same time for gas and OTG, a little less for microwave. Okay. So yes, ladies, मैंने तीनों ही methods written form में भी डाल दी है chat box में. आप उसको एक बार check कर सकते हैं if in case कुछ भी आप confused हो गए हैं तो. But I guess तीनों ही microwave, OTG and gas वाला method आपको अभी तक clear हो गया होगा. So I hope everything is clear till now. If yes, just give me a thumbs up. ओके, वन मोर थिंग, अगर आपके पास वायर रैक नहीं है आप एक स्टील की कटोरी ले सकते हो. बेसिकली यहाँ पे जो पर्पस है वो कढ़ाई का जो बेस होता है और जो प्लेट का बेस होता है वो दोनों साथ में नहीं लगने चाहिए, उनके बीच में कुछ गैप होना चाहिए. तो यहाँ तो वायर रैक रख सकते हो, यहाँ एक स्टील की कटोरी रख सकते हो, जस्ट हमें गैप बनाना है. इफ यू डोंट हैव अ वायर रैक यू कैन यूज अ स्टील बोल. You can just do it upside down and keep it. The main purpose is to create a space between the plate with the cookies and the base of the kadhai. So we need to make some space between that. So either you can use a wire rack or a steel katori. Okay. So here I am doing, I'm sorry to cut in, I am doing a midway rotation. So what I'm doing, I took my tray out and from the other side, I am inserting it back in. So मैंने कढ़ाई एक साइड से निकाली, उसको मैंने घुमाया, घुमा के मैंने दूसरी साइड से फेस करके उसका वापस उसको ओवन में डाल दिया. So this is called midway rotation. This needs to be done after 5 to 6 minutes. This is mandatory for cookies, any cookies. मिडवे रोटेशन कुकीज के लिए बहुत जरूरी होती है. कोई भी कुकीज आप बना रहे हो, इवन बेकिंग के लिए आपको हाफ टाइम में मिडवे रोटेशन करनी है अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए. ओके Okay. So, Kamalpreet, there are a few questions here. So yes, can please. we take them now? Yes. Okay. Just a sec. Okay. So there's a question that, ma'am, can we add emulsions in the cookies? Do we add? Sorry. Can we add emulsions in cookies? Emulsions? Yes. That is not required.
Okay, so there's a question that ma'am, does baking cookies on a black tray makes a difference as at times when cookies become too dark from the base? Yes. So never bake your cookies direct on OTG trays. Always use a parchment paper or a silicone sheet. Because what happens with time, your baking trays get a little dark because it's getting baked again and again. Something is falling on that which cannot be cleaned. So never bake anything direct on the trays. Always use a base like parchment paper, butter paper, or silicone sheet. Then you will get good results. आप कभी भी बेकिंग कर रहे हैं किसी भी चीज की कर रहे हैं डायरेक्ट कभी भी आप उसको ट्रे पे मत रखो या तो पार्चमेंट पेपर यूज करो बटर पेपर यूज करो या सिलिकॉन शीट यूज करो क्योंकि टाइम के साथ जो आपकी बेकिंग ट्रेज होती हैं वो गंदी हो जाती हैं उन पे कुछ गिरता है कुछ क्लीन नहीं हो पाता वो बार बार अवन के अंदर बर्न हो रही हैं ओके सो इसीलिए रेकमेंडेड नहीं होता डायरेक्ट मत यूज करो कुछ भी Okay, so again, Ju is saying that ma'am, I do use parchment paper on the tray, but still it is happening at times. Okay, then try to switch to the this method. Apply some oil and do a midway rotation. कुकीज जब भी आप बना रहे हो एक मिडवे रोटेशन करो मिडवे रोटेशन से क्या होता है कि जो एक साइड पे हीटिंग आपकी लग रही है सी द हीटिंग इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड एंड योर कुकीज ट्रेस दिस बिग so on this cookies the heating is less on these cookies which are just near to the heat is extra so always do a midway rotation I hope that will help you उससे फिर नीचे से बर्न नहीं होंगी ओके और अगर उसके बाद भी आपको लगता है तो हाफ टाइम पे कुकीज ही फ्लिप कर दो Okay. Yes, Shamla, I guess we took this in the midway only. You sure can make small balls and bake them then. They will also give you a good results. Okay. So I guess we have taken all the questions here. Ladies, if you have any more questions, please let us know. If not, then please drop how do you like this session and what more sessions do you want us to bring. So yes, ladies, I hope that you all really liked the session, and if you did, please go on Google Play Store and rate and review us, and also do subscribe to our YouTube channel because we come live twice a week, and I don't think you want to miss any of these sessions. So do subscribe, and if you have any suggestions for us, please drop them in the comment section, and we'll be more than happy to bring those sessions to you. कोई भी अगर सेशन आप चाहते हो कि ऐसा कोई सेशन हो तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं प्लीज चेक द कमेंट सेक्शन और फिर आपके जो भी सजेशंस होंगे हम लोग वैसे सेशंस लाने का ट्राई करेंगे So you can see the cookies are done, the small cookies are done. Can you shift the camera? Yeah, sure. Just give me a second. Yes. Because this was small, so it is done before time. So Kamalpreet, there's this one question that ma'am, how do you check कि हमारी जो cookies हैं वो ready हो गई? हमारी cookies हैं वो ready हो गई? Okay. Yes. So what's the question in it? Sorry, Saloni, I didn't get it. Somebody is asking that ma'am, how do we check? Like at what time do we need to check whether our cookies are ready okay. or not? Okay. You will see a golden color on the top. In green, it is not visible. On the white ones, I will make you see that. So this is also done. You can see. Can you see a golden color on the top? So cookies are always judged with the color. So cookies हमेशा color से judge की जाती है. Okay? It is good. So yes, ladies, you can see a golden type of color on the top of your cookies. If you see those golden colors, that simply means that your cookies are absolutely ready to use and to have, of course.
एंड रिमेम्बर कुकीज जब आपकी बाहर आएंगी ओटीजी से तो वो थोड़ी सी सॉफ्ट रहती हैं. इसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए 15-20 मिनट के लिए तो वो मस्त से कुकीज Exactly. हो जाती है. मेरी तरफ मत Okay, देखिए when ये I सोचिए. huh, when I यस सर. started baking cookies first, so mine was also chocolate chip cookies. What I learned within time that example after 10-15 minutes you realize when it is nicely cooled down. Can you shift the camera? That your cookies are not baked properly. There is some it's little on the uncooked side. But now what will you do? Never get afraid of keeping it back in the oven. Trust me, nothing will happen. You will just get a nice result. It will cook fine. It will just get soft again, and you have to wait for it to cool down. अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी कुकीज नहीं बनती हैं, अभी जैसे मैंने ओटीजी से निकाल दी, ओके, अभी बहुत सॉफ्ट है, नहीं कर सकते ना, इसको खा सकते हो क्योंकि बहुत गर्म है. Neither you can eat it because it's very hot, nor you can judge it because it's very soft. So let it cool down for approximately 10 minutes. Then taste it. If you feel, although with the color, you will not feel that it is uncooked, but still, if you feel it is little uncooked, keep it back in a preheated oven for 2 to 3 minutes. And there is no harm in putting this back in oven. It will just be perfect. ओके, वापस अवन में रख दीजिए 2-3 मिनट ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दोबारा उसको ठंडा होने दीजिए, दोबारा में आपकी कुकीज परफेक्ट बन जाएंगी. कभी अगर ऐसा होता है, दिस इज जस्ट फॉर इन केस ऑफ इमरजेंसीज. डोंट ट्राई दिस एवरी टाइम. Try to judge it with the color. With time, you will start judging it with the color. Saloni, I'm sure you also judge it by the color now. यस एब्सोल्युटली. अब देख के समझ में आ जाता है कि यस ये हो गई है ये नहीं हुई है तो देख के Yes. समझ में आ So जाता है. this is just a tip for when you are starting to work with cookies. Okay, this is just in case of emergencies. Don't use it every time. बिकॉज थोड़ा सा यस टेक्सचर में फर्क पड़ता है जब आप उसको रीबेक करते हो. Yes, and you might also end up having a really hard cookies अगर आपने पता चला ज्यादा देर के लिए यस, बेक अगर कर दिया. बहुत ज्यादा कर दिया. एग्जैक्टली. इफ यू फॉरगॉट द टाइम, इफ यू फॉरगॉट टू सी योर वॉच, देन यू आर गोइंग टू रिग्रेट कि जो पहले था वो भी गया. Yes, and उसके बाद वो इतनी ज्यादा हार्ड हो जाती है they're just like brick कि आप कुछ नहीं कर सकते अब इसका. Exactly. So you can see the cookies here. Can you please shift the spotlight? So both the cookies are ready. One we have done with the color, just like the image. You can see it on the Pankhuri platform. And the other one is my version, which is quite easy and quick. Okay, so you can make any of them. So how does this Yes, look? ladies, I absolutely love these. मुझे बहुत पसंद है cookies and seeing them I just feel like go back to my kitchen and just make some. And trust me, my kitchen is smelling just like heavenly at this point. Cookies fragrance are Yes. always so good. Yes, it's just great. They're just refreshing. It just feels nice और जल्दी से बन भी जाती है. Best part is that. Exactly. थोड़ा सा So yes, टेक्निक में ladies. पेशेंस लगता है, बट बहुत जल्दी बन जाती हैं. और इसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छी होती है. 1 महीने तक आप एयर टाइट कंटेनर में रखो और एंजॉय करो. यू कैन कीप दिस कुकीज इन एयर टाइट कंटेनर फॉर अप टू अ मंथ एंड यू कैन एंजॉय दिस कुकीज फॉर अप टू अ मंथ. Yes. So yes, ladies, I hope you all really like the session because cookies are सबकी favorite and I hope कि आप सब लोग घर पे अपने आप cookies बनाओगे, सबको खिलाओगे because cookies बहुत ही टेस्टी चीज होती है. Just try them, send us the picture, we'll be more than happy. And अगर कोई भी confusion या कोई भी query हो तो आप पूछ सकते हैं पंखुड़ी ऐप के ऊपर. Recording, certificate, PDF, products सब कुछ आपके ऊपर updated है, आप check कर सकते हो. And I hope you all are going to make this and I hope to see you all in the next session. Thank you so much, Kamalpreet. It was just an amazing session with you, like always. Thank you so much. Thank you, Saloni. Thank you, participants. So, thank you, Kamalpreet. And I hope everybody you are going to join us next time. Till then, bye-bye, take care and have a great day, guys. So bye everyone. I hope to see you all in the next time. So till then, bye-bye, take care, have a great day.